Welcome back, students. In last video we have discussed about HTML, types of HTML tag, features of HTML, components of HTML, and we have also discussed structure of HTML. Now in this video we will discuss about HTML editors. There are mainly two types of editor. First is WYSIWYG. It stands for what you see is what you get. This type of editor allows to create a web page without the use of HTML tag. Means in these type of editors we don't have to write the code. Directly we will use the commands. कैसे? Like drag and drop command से with the most of what you see is what you get editors. Examples of these types of softwares are Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression. In these types of software there are inbuilt commands. We don't have to write any program. We can use from drag and drop commands, drag and drop method. Now next is text editors. Second type is text editor. Mainly we are using these types of editors for beginners. These text editor use HTML tag to create web page. Example of text editor are Notepad, Coffee Cup, Bluefish. Notepad. What is Notepad? Notepad provided by the Microsoft Corporation and installed by default. आपके अपना पीसी जब आप इंस्टॉल करते हो या माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करते हो तो दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट अलोंग विद द विंडो के साथ में ये क्या आता है, डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है. वी डोंट हैव टू इंस्टॉल specially, but there is one another software that is Notepad plus. That is we can write the HTML program in that also. So that is advanced version of Notepad, but mainly Notepad is using for the beginners. Now next is example of text editors are Coffee Cup, Bluefish. Bluefish is an open source code editor and can run on Linux, Mac, OS, FreeBSD and Solaris. It supports FTP, SFTP, HTTP and WebDAV. It is a very reliable tool as it can open over 500 documents one by one. It can recover changes automatically if the system crashes while editing. So this is another software, but for the beginners, for the students, mainly Notepad we are using. And this is the screen of Notepad where HTML program is written. First of all there is HTML, then head. We have discussed about the structure. Then the one program is written here. Now we are talking about how to create HTML document. What are the steps to creating HTML document? Is first of all we will click on start button. All of you know about the where is the start button is located on the desktop left corner. Start button is located. Now after that click window accessories. After that we will select Notepad. A Notepad screen will appear. Here we will write the HTML code. We know about the what is HTML code. मतलब आपको जो भी वेब पेज डिज़ाइन करना है उससे रिलेटेड we will write source code there. First of all we will follow that structures that we have discussed earlier. HTML head, title, then we will close head, then we will start body part, then in body part we will write complete tag, then we will close the HTML tag. So this is mainly a Notepad screen. Now next step is to save the Notepad file. Click file menu, select save as option. For save a file we will click on file menu and there is one option that is save as option. We will choose save as option and next step is choose the location where you want to save the file. Means आप अपनी फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, like C drive, D drive, E drive, on the desktop, where you want to save the file. That is called location. Choose the location where you want to save the file. Now next step is
type the file name with an extension. An extension can be .html or .html. In file name text box, first of all we will write the file name, like for example my first program .html या फिर my first web page .html, or we can write .html also. So these are called extensions. Earlier I have told you in last class that what is extensions. जो आपके फाइल के पीछे डॉट के बाद में जो नेम आता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन. एंड ये क्या बताता है, ये बताता है कि विच टाइप ऑफ फाइल इज़ दिस. लाइक आपका MS वर्ड की फाइल है तो दैट इज़ डॉक्यूमेंट फाइल .doc फाइल. आपकी नोटपैड फाइल है तो दैट इज़ txt फाइल. आपकी वर्डपैड की फाइल है तो दैट इज़ RTF फाइल. आपकी इमेज फाइल है दैट इज़ JPEG फाइल्स. आपका कोई म्यूज़िक है मतलब ऑडियो है तो MP3 हो गया, वीडियो है तो MP4 हो गया. तो दीज आर कॉल्ड एक्सटेंशंस. तो how we can recognize the file? By the extensions. So for the HTML we will write .htm or .html. Now next is click on save button and our file will be saved. Now we will discuss about, earlier we have discussed how to create and save a file. Now we will discuss about how to view HTML document using a web browser. All of you know about the web browser. Starting of the chapter we have discussed like Internet Explorer, Google Chrome. These are the web browsers. So first of all we will open any web browser. Web browser can be Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome. We will open any web browser, then click file menu and select open. हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, ब्राउज़र के फाइल मेन्यू में जाएंगे, उसके अंदर हम ओपन को सेलेक्ट करेंगे. द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. देन क्लिक द ब्राउज बटन. देन लोकेट द फाइल एंड क्लिक द ओपन बटन. लोकेट द फाइल मीन्स वी विल सेलेक्ट दैट फाइल. मीन्स आपने जो नाम से, जो नेम से आपने अपनी फ़ाइल सेव की है, लाइक माई प्रोग्राम, माई फर्स्ट वेब पेज, जो भी आपने फ़ाइल को नेम दिया है, you have given any name to the file, you will choose that file, you will locate that file and click on open button. Next step is click the OK button in open dialog box. The output in the form of web page is displayed. Then whatever code is written in the our notepad window, मतलब आपने अपने notepad window में जो भी कोड लिखा है it will show on the web page. सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया है, सिंपल सा आपने एक वेब पेज बनाया है जिसमें एक सिंपल लाइन लिखी है, that is computer application, and you have closed that line in underline, bold, italic, then it will show on the web page on the web browser. So these are the steps for viewing HTML document. Now we are talking about the HTML attributes. What does mean of attributes? Attribute is a property of tag. Means it will say about the tag. Means it is used inside the tag. It is specify additional behavior about the HTML tag. Suppose we want to change the font size, font color or font style. Like आपको जो पहले वाला कलर ब्लू था, आपको ब्लू नहीं चाहिए, आपको उसको रेड चाहिए, वॉट एवर कलर यू वॉन्ट, देन दैट इज़ द सब वैल्यू, सब एट्रीब्यूट ऑफ दैट टैग. लाइक फ़ॉन्ट एक टैग हो गया और उसकी जो एट्रीब्यूट्स हो गए दैट इज़ साइज़ हो गया, कलर हो गया, स्टाइल हो गया. तो दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट. तो एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ टैग. इट इज़ यूज्ड इनसाइड द टैग. टैग के अंदर यूज में आया जाता है. इट इज स्पेसिफाई एडिशनल बिहेवियर अबाउट द टैग. नाउ नेक्स्ट इज दे आर ऑलवेज रिटन इन स्टार टैग. Earlier we have discussed there are opening tag and there are closing tag. opening tag में slash नहीं आता है और starting tag जो closing tag होता है उसमें slash आता है. तो जो attributes होते हैं where it will return, they are always written in start tag. Attribute appear as an attribute name and it is followed by an equal sign and the attribute value. सबसे पहले आप टैग लिखोगे, टैग के बाद में एट्रीब्यूट नेम लिखोगे, देन यू विल राइट इक्वल्स टू साइन, देन इट विल वी विल राइट द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट एंड इट्स वैल्यू इज एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स. फॉर एग्जांपल लाइक फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है आपको, फ़ॉन्ट के कलर को आपको रेड करना है, तो व्हाट विल बी द सिंटैक्स? फ़ॉन्ट
color equals to, in double quotes we will write red, and after we will close the angular bracket, then computer application we will write, then we will close the font, and here computer application will be in red color. So this is the simple example of HTML attribute. Our chapter has finished. Thank you.